Yes, now you have to mark your present key as the recording is being started. Sushi from class 7, Pranav 7, Shreyanshi 5th, Harshpreet 5th. Okay. Let's start with standard 5th, then 6th, and then 7th. Okay. Standard 5th, we have started your lesson number 1. Yes. And we have completed most of the part of it. Your lesson is very big. That your super senses lessons we have done. Okay. Let's start. We have done till the sense of smell. Okay. Now this one. Write the name of bird which has eyes in front of its head like humans. किसके eyes in front of head होते हैं humans की तरह? ऐसा कौन सा bird है? बोलिए स्टैंडर्ड 5th बोलो. हर्षप्रीत, श्रेयांशी, हरकीरत बोलिए. ओके. आउल. और ओके लेट्स सी. और किनके आइदर साइड होते हैं? कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जिनके आइदर साइड आईज होते हैं? एक साइड, एक आई, एक वन साइड एंड अदर आई अदर साइड. Okay, many birds like sparrows and all of, right? Yes, they have their eyes on either side. So most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So, birds have to turn their head to see around. बहुत सारे birds होते हैं जिनके eyes either side ही होते हैं. So they have to move their neck here and there to see anything. Okay, because most of the birds' eyes are not movable, so they have to move their neck, and they cannot see. They cannot they don't have eyes like us, so they can focus when they look straight they can focus on same object, and when they are not looking straight they can see two different things from two different eyes. Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action, wave hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? अगर आप अपना एक यस आप अपना एक आई क्लोज करते हो या फिर उस पर हाथ रख के उसको क्लोज कर देते हो एंड अपने फ्रेंड को अपने राइट साइड में थोड़ी दूर तक खड़े रहने को बोल के कुछ एक्शंस करने बोलते हो, तो आप उसके एक्शंस अपनी नेक मूव किए बिना देख पाते हो या नहीं? क्या आप देख सकते हो? नो, वी कैन नॉट. Now try to look. No. Yes. Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अभी आपको नेक मूव नहीं करनी है, लेकिन आप अपने दोनों आंखें खोल के देख सकते हो. सो कैन यू सी? Yes, yes, we can. What was the difference on looking with one eye or both eyes? With one eye we cannot see, and with both eyes we are able to see what the friend was doing. Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When it was easier to catch, अभी आपको ball या coin toss करना है
एंड उसको पकड़ना है, कैच करना है। सो कैच करते वक्त पहली बार आपको दोनों आंखें खोलनी है एंड सेकेंड टाइम आपको एक आंख क्लोज करनी है। कौन से टाइम पे आपको इजी लगा, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम? कौन से टाइम पे इजी लगेगा आपको? फर्स्ट टाइम, बिकॉज बोथ आईज आर ओपन एट फर्स्ट टाइम। Yes. Some birds like kites, eagle, vulture can see four times as far as we can. See, kite, eagle and vulture ये ऐसे birds होते हैं जिनकी देखने की कैपेसिटी हमसे 4 times ज्यादा होती है। These birds can see things from a distance of distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meters. जो हम 2 मीटर के डिस्टेंस से देख पाते हैं, जो जो भी चीज 2 मीटर के डिस्टेंस से ह्यूमन आईज देख पाते हैं, वो ये जो बर्ड्स है लाइक काइट, ईगल एंड वल्चर 8 मीटर्स की दूरी से देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? कैन यू गेस? यस, ईगल को जो भी ग्राउंड पे रोटी रखी है वो कितनी दूरी से दिखती होगी? नो आइडिया? 8 what? 8 meter. Eagle is flying in the sky and the roti is on ground. Some kilometer? Yes? Okay. Now tell me, do animals see colors? What do you think? Can animals see colors? Can an animal see colors? What do you think about this? Just tell me yes or no. What do you think? आपको क्या लगता है? Some can and some cannot. Okay, let's see. Animals cannot see as many colors as we can. See how things is in different in these pictures will be seen by some animals. See जितने रंग जितने कलर्स हम देख पाते हैं एनिमल्स इतने कलर नहीं देख सकते। जैसे कि ये जो एक फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन बीइंग के लिए वो पिंक कलर का है, पिंक रेडिश। स्पैरो के लिए भी वो पिंक रेडिश है, लेकिन डॉग के लिए इट इज फ्लोरोसेंट। yes, fluorescent green and like I think lizard is given, उनके लिए वो white है। so सारे एनिमल्स के जो कलर विजन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. ऐसे कहा जाता है, ऐसा मानना है कि जो एनिमल्स दिन भर अवेक रहते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, जैसे कि स्पैरो, डॉग। ओके, बट दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं या फिर रात को घूमते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही देख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट विजन। नाउ sharp ear. In class 4 you have read that we cannot easily see birds ears. Yes, in the lesson 2 of EVS, right? Their ears are small holes covered with feathers. Now tell me the names of 10 animals whose ears can be seen and the names of some animals whose ears are bigger than our ears. Okay, आपको ये दो क्वेश्चंस लिखने हैं। जिनके पास बुक नहीं है, टेक अ स्क्रीनशॉट। Standard 5th, take a screenshot of these two questions and write them along with your answers in your notebook. Have you taken Standard 5th? Those who don't have book, please take a screenshot.
and write the questions in your notebook. Yes? Standard 5th, are you done? Shreyanshi, Harshpreet, Harkira, have you taken the screenshot? Okay. Now from 6th, standard 6. Is there anyone from standard 6? Yes, standard 6. Is there anyone? Raise your hand, please. Avneet is there. Shreyanshi, put off your mic. Avneet, are you there? Okay, because you are only one student from standard 6, na? And just now, so I think some due to some network issue you left. So that's why I'm asking. Okay. Yes, let's start. Avneet, how are you feeling now? Fine, ma'am. Okay. Okay. So we have started your lesson number 1, that is food, where does it come from? And yes, we have done this, done with the whole lesson, and we have started with question and answer session. You were there in the last lecture, Avneet? Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay. So you may remember that these 3 questions we have done, and we are left with the 4th one, right? Yes. So Yes, let's ma'am. start. Okay, fill up the blanks with words given. They have given us word herbivore, plant, milk, sugarcane, and carnivore. So one by one, I'm going to ask you. You can put on your mic and tell me the answer. Okay. Tiger is a dash dash because it eats only meat. Carnivorous. Yes. Deer eats only plant product and so is called. Ma'am, herbivore. Yes, herbivore. Parrot eats only dash dash products. Seeds. Plant, plant Plant. products. The dash dash that we drink, which comes from cows, buffaloes, and goats, is an animal product. Ma'am, milk. Milk. Yes. We get sugar from Sugarcane. 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 Okay, is there anyone else along with Avneet who is also from 6th standard? Please let me know. Is there anyone else from 6th standard? Only Avneet is there, right? Yes, ma'am. Avneet, do you have your book with you? Yes, EVS book? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so write these 5 filling the blanks in your notebook. Okay, Okay, ma'am. and then we'll be starting with your next lesson. So after completing, let me know. Yes, your Okay. lesson number 2 is component of food, I think. Okay, components of food. So after completing, please let me know. Now standard 7th. Yes, we have started your lesson number 1, nutrition in plants. So let me know how many are there from standard 7th. 7th standard students, raise your hand. Pranav.
Anshak, Khushi. Okay, let's start. Okay, so we have started the process of photosynthesis in the previous lecture. Okay, we have discussed upon chlorophyll and all. Yes. So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use the carbon dioxide which is present in the atmosphere and water from soil through roots to synthesize carbohydrate, and this process is represented with the equation carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen. So here carbon dioxide and water are your reactants and carbohydrate and oxygen are your products. Okay, during yes, here diagram is showing the process of photosynthesis. These are leaves on which light energy from sun is falling, and again leaves are utilizing the carbon dioxide from atmosphere and giving out oxygen. Yes, and some carbohydrates have been made inside the leaf. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Okay. Now, now here Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Tell me, what do you think about this? Some plants are having dark red, brown leaves. So these plants also carry out photosynthesis. Yes, Anshak. Yes, ma'am. वो With the help of what? मैम बिकॉज वहाँ पर रेड या अलग येलो कलर आता है ग्रीन कलर के लीफ का बदले में, बिकॉज वहाँ पर जैंथोफिल और उस टाइप का अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन Very good. उसके साथ नीचे जैंथोफिल और उस टाइप का कुछ पिगमेंट के नीचे क्लोरोफिल होता है, तो उसके साथ साथ उस कलर के साथ साथ नीचे स्टार्च भी बनता है. Very good, Anshak. Okay, here is one activity. Take two potted plant of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. So what do you think about this activity? When you keep two potted plants of same kind, one in dark and or in black box and other in sunlight for 7 to 2 hours, and आपको जैसे कि आपने 6 स्टैंडर्ड में किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आपको इसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. सो क्या होगा दोनों के पत्तों पे? व्हाट यू विल ऑब्जर्व डार्क डार्क वाले में और जो भी सनलाइट में रखा होगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व? टेल मी. यस अंशाक. यस मैम, वो जो लीफ वो डार्क में रखा गया था उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे तो
उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, लेकिन जो सनलाइट में होगा वो हमारा ब्लू ब्लैक कलर आएगा। Why? मैम क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में चेंज करता है। Yes. So everyone got the answer now. Anshak is very right about this. So everyone, have you got it about this experiment? You have done this in your, you have learned already in your sixth standard. Okay. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation. अभी हमने फिर से वो जो डार्क में रखा हुआ प्लांट है उसको सनलाइट में रखा 3 to 4 डेज के लिए। अगेन हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करनी है। सो व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन नाउ? नाउ व्हाट विल हैपन? यस यस द मैम, अगर मैम यहाँ पर डिफरेंट होगा मैम। जो वाला अब सनलाइट डार्क में रखा हुआ था वो अब सनलाइट में आया, तो जो सनलाइट में अभी है वो उसका आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आएगा। यस और दूसरा वाला जो सनलाइट no में था। no now you have to check for one only, this one only. Okay, yes, very good. So अभी हमने क्या किया, जो डार्क में रखा हुआ प्लांट सनलाइट में रखा, now it will be positive for starch, that is the iodine test. Okay, the leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. जो भी अदर कलर के लीव्स होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन रेड, ब्राउन या फिर जो भी कलर के अदर लीव्स होते हैं उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब वो ज्यादा होते हैं, इसलिए जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है उन्हें वो ढक देते हैं, दे मास्क इट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, सो इस इन सारे पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? Yes, आपने algae देखी होगी। Yes, Anshak? मैम बिकॉज दे आर ए मिनिएचर टाइप प्लांट, they also Yes, contain chlorophyll. yes. Yes, they contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Okay, so remember this. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? Yes? Any idea from where do the plant absorb nitrogen or where it can found it? Yes, Anshak again. Yes, ma'am. Ma'am, with the rhizobium, the nitrogen fixing bacteria. Bacteria. Yes. So recall that nitrogen is present. I'm asking you all these because you have already learned this, okay? Yes, anyone said anything? तू Bharati? कितने टेबल पा आया है? मैं तू और कितने कितने में टेबल पा
प्लीज सब लोग, जब भी आप क्लास के मीटिंग में हो, during the class, please keep your mic and camera always off. Whenever I'm giving you freedom, whenever I'm asking you anything, then only you have to put on your mic. Please, please. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. हमारी जो एयर है उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में abundantly नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. लेकिन प्लांट्स ये जो एयर वाला नाइट्रोजन है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट यूजेबल फॉर्म दे रिलीज इनटू द सॉइल. These are absorbed by these plants along with water. और प्लांट के जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वही सॉइल में से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamin also. Okay, so till now, we have learned how plants are able to produce carbohydrates by process of photosynthesis, and now we have learned that how plants can absorb nitrogen and fulfill their need of nourishment. Have you understood? Yes. Have you understood everything? Okay. Now, other mode of nutrition in plant. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. As we have studied till now, that chlorophyll is most important thing to produce food in any plant. Yes, chlorophyll is required. So, what about the plants which do not have chlorophyll? They cannot synthesize their own food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Then उनको उनका न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और वो कैसे जी पाते हैं? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे कि हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं हमारी जो फूड की नीड है उसे पूरी करने के लिए, उसी तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं खुद की भूख पूरी करने के लिए. दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वो उन प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around stem and branches of a tree? Yes, we can see. Yes, आपने ये देखा है कभी इस तरह का प्लांट, होस्ट प्लांट, अमरवेल, जो किसी भी प्लांट पे चढ़ा हुआ होता है, येलो कलर का नूडल्स की तरह दिखता है. यस, गुड. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा or amarvel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. So ये प्लांट कस्कटा नाम से जाना जाता है, जो जिसे अमरवेल भी कहा जाता है. उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता. सो ये जो भी प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, चढ़ता है, उससे रेडीमेड फूड ये ले लेता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है, जिस पे चढ़ा हुआ होता है, उस प्लांट को होस्ट कहा जाता है. सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, Vascata is called the parasite.
और ये क्या करता है कसकटा, जो भी प्लांट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है उनको ले लेता है, इसलिए इस प्लांट को पैरासाइट कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? टेल मी, आपको क्या लगता है? हम भी पैरासाइट्स है या नहीं? नो, व्हाई वी आर नॉट? यस अंशा? Yes, ma'am. Ma'am, because Cascada plant made ready-made food directly लेता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, पकाते हैं, उसके बाद खाते हैं। मतलब हम भी कुछ चेंजेस उसमें करते हैं, लेकिन कसकटा डायरेक्ट उसके बॉडी के अंदर लेता है। यस, ओके गुड। See, every time when you are giving answer, आपके पास उसका explanation भी होना चाहिए. So Anshak is going very good. Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. Yes, what do you think about this? Yes, you can write it in the chat box as your voice is not clear. Some मैम background नाउ sound is नाउ coming. मैम अब मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, yes, now it is clear. यस मैम। मैम क्योंकि वो भी हमारा जो ब्लड है, वो जो खून चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो जो मॉस्किटोज है वो भी हमारा खून चूसते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं। Okay. Have you seen or heard of plant that can eat animals? सुना है कभी आपने या फिर देखा है कभी? ये संशा? यस मैम, देखा है। ओके, देखा यस भी है मैम। आपने, गुड. There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? See, some plants, कुछ plants ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं. Such plants may be green or of some other color. वो plants green या फिर कुछ other color के भी पाए जाते हैं. Look at the plant in figure 1.6. Here is a plant named pitcher plant. Yes, pitcher plant. Pitcher plant को आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है? As I am from Maharashtra, हमारे यहाँ पे उसे घट्टपर्णी बोलते हैं, घट्टपर्णी. आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है पिचर प्लांट को? डू यू हैव एनी आइडिया? ना? यस अंशा? मैम मैंने देखा है, लेकिन उसका नाम मुझे पता नाम नहीं। नहीं पता, ओके फाइन. सो दिस इज, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, पिचर प्लांट को आपकी कि लोकेलिटी में क्या क्या कहा जाता है वो आप सब मुझे बता दो. मैम यस. सो the pitcher like or jug like structure is modified part of leaf. ये इसकी जो लीफ होते हैं उसका एक मॉडिफाइड पार्ट होता है जिसका जग लाइक स्ट्रक्चर होता है. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड which can open and close the mouth of the pitcher. और लीफ के अपेक्स से एक ढक्कन जैसा, एक लीड जैसा पार्ट हो जाता है, मॉडिफाइड तैयार हो जाता है जो इस पिक्चर को क्लोज या ओपन कर सकता है. Inside the pitcher, there are hair which are directed on downward. When an insect lands in a pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स इस ये जो प्लांट है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो इंसेक्ट क्या करते हैं? इससे कुछ नेक्टर या कुछ खाने की चीज मिले. मैम स्मेल भी निकलता है। यस, ओके. सो ये इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पे जाके बैठ जाते हैं. सो व्हेन द पिक्चर दिस प्लांट रियलाइज के
हाँ, इस पे अब तो हमारे यहाँ पे इंसेक्ट बैठ गया है, तो ये क्या करते हैं, इसके जो हेयर है वो मूव हो जाते हैं डाउनवर्ड एंड वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। द लीड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप, उसकी लीड भी बंद हो जाती है और वो इंसेक्ट वहां पे ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द फीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जैसे कि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस फीचर प्लांट में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। Such insect eating plants are called insectivorous plant. तो ये कुछ प्लांट्स है जो इंसेक्ट खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? Yes. आपको क्या लगता है कि ये इस प्लांट को, जैसे कि सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉइल में से मिलते हैं, सो इस प्लांट को नहीं मिलते होंगे? Yes, that's why it is feeding on that insect. यस Is मैम, it मे बी so? मैम इस सारे न्यूट्रिएंट्स इसलिए नहीं मिलते तभी वे दूसरे एनिमल्स को ट्रैप कर। Yes. Okay. So we have done with your 1.1, 2, and 3. Let me see how this works. Avneet, you are done. Avneet, I haven't took for a standard 6 now. Avneet, okay, she's not here only. Okay, fine. So, seventh standard, let's continue. ला अपना 1.4 है saprotrophs. Okay, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. So आपने mushrooms देखे होंगे या खाए भी होंगे, right? Yes, yes. आपने mushrooms देखे हैं? Yes, okay. Yes, I think fifth and sixth standards have left. Only Shreyanshi is there from fifth, right? So let's see कि इनको जीने के लिए कौन कौन से nutrients की जरूरत होती है. Bojo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. So let's see. This is the fungi. Have you seen such type of growth on your bread or roti, which is kept in moist condition? Yes, Ansha? यस मैम, देखा है। Yes. So मतलब what it is ब्रेड called अच्छा as? कहता है। क्या बोलते हैं उसे? यस बोलो। मैम फंगाई। Yes. These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrients. Wait, okay, sorry. I'm going wrong. Yes, first I have to read the activity. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in the moist, warm place for 2 to 3 days. ओके, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दिस कि अगर हम ब्रेड के पीस को मॉइस्ट कंडीशन में रख देते हैं तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं जिसे हम
फंजाई कहते हैं. ओके. यस. So, they absorb nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organism take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprophytic nutrition. जब कोई ऑर्गेनिज्म मरे हुए या फिर जो डीके हो रहा है, पूरा गल रहा है, सड़ रहा है, उसमें से उस मटेरियल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, तब उस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. एंड और जो भी ऑर्गेनिज्म इस सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है. Fungi also grow on pickles, leather clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air, and when they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Now tell me, अगर अगर फंगाई जैसे कि हमें बताया गया है कि फंगाई के स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं. अगर आप अपने फूड को ह्यूमिड जगह पे रखते हो, उसको ठीक से कवर वगैरह नहीं करते हो, तो वो स्पोर्स उसमें जर्मिनेट होते हैं and they start growing and our food may get spoiled and we may get some diseases by eating such type of food. Okay. So what do you think? हमें क्या करना चाहिए अवॉइड करने के लिए? What we can do to avoid this? Yes, अंशाक. मैम, यहाँ पर हमें दो प्रिकॉशन लेना चाहिए. मैम, फर्स्ट Yes. इज हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को मॉइस्चर से बचा कर रखना चाहिए. हाँ. और सेकेंड चीज, उस फूड को अगर ज़्यादा समय रखना है तो उसे फ्रिज में रखना चाहिए. क्योंकि Yes. जब हम को कुछ भी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में ठंडक होती है, इसीलिए उस ठंडक के वजह से जो भी बैक्टीरिया ग्रो करना Yes. वो चाहते ग्रो हैं नहीं हो वो नहीं पाते. कर सकते. Yes. Okay. Good. Okay. So here are some new again some new terms also. So we will be learning them in our next lecture. So whatever we have learned till now, have you understood everything? Tell me. Okay, I will check by asking some questions. Tell me, why do organisms take food? Why do organisms take food? Yes, Anshak. Yes, ma'am. Organism take food for the requirement of their energy and also the maintenance of their body. Yes. And one more question, only one. Can you differentiate between parasite and saprotroph? Yes, Anshak. Yes, ma'am. Ma'am, parasite are the plants. Hmm, parasite are the organism who take all the requirement food, ready-made requirement food from the Yes. other plant, which is called host. But in the case of saprophytes, they grow on the dead and decaying matter and grow Yes. in dead and decaying matter for their energy and growth. Okay, good. Okay, so everyone, we are going to stop over here for today. You can leave the class. We will continue the lesson in next lecture. Okay? Bye bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Have a good Bye. day. Same to you. Bye, ma'am. Bye.